हेलो गाइज। तो आज और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पैरामेडिकल कोर्स रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। एंड क्या पता पूछ भी सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी पूछा है ये सब क्वेश्चन, मतलब कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज का। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है ये ओ नेगेटिव को बोला जाता है। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट इज blood group is determined by the presence of antibodies, hemoglobin, antigens on RBC, plasma. Blood group is determined by the presence of, option C is correct, antigens on RBC. Next is which anticoagulant is commonly used in blood collection bags? कौन सा एंटीकोआगुलेंट इज कॉमनली यूज किया जाता है इन ब्लड कलेक्शन बैग में? ऑप्शन दिया हुआ है EDTA, हेपारिन, CPDA, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन देखें तो व्हिच एंटीकोआगुलेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ए ब्लड कलेक्शन बैग? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनाइन इज यूज टू प्रिजर्व जो डोनेटेड ब्लड। व्हिच एंटीकोआगुलेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ए blood collection bag? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनाइन ये यूज करता है टू प्रिजर्व डोनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉस मैचिंग इन ब्लड बैंकिंग? ऑप्शन दिया हुआ है मैचिंग स्किन कलर, मैचिंग ब्लड विथ यूरिन, एंड टेस्टिंग कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड, मिक्सिंग ब्लड विथ वाटर। तो व्हाट इज क्रॉस मैचिंग इन ब्लड बैंकिंग? ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेस्टिंग compatibility between donor and recipient blood. Next is blood should be stored at what temperature? ऑप्शन दिया हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। Blood should be stored at what temperature? Option C is correct, 2 to 6 degrees Celsius. Next is which test is done to detect HIV in donated blood? कौन सा टेस्ट किया जाता है done to detect HIV in donated blood? तो ऑप्शन दिया हुआ है Coombs टेस्ट, ELISA टेस्ट, वाइडल टेस्ट एंड RPR टेस्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ELISA टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है एंड यूज टू डिटेक्ट HIV एंटीबॉडीज। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस विथ कॉन्स्टेंट एजिटेशन, रूम टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग। प्लेटलेट्स शुड बी स्टोर्ड एट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस विथ कॉन्स्टेंट एजिटेशन। नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव इज कॉल्ड। तो ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर इज O नेगेटिव। नेक्स्ट इज RH incompatibility is a risk during digestion, breathing, pregnancy, dialysis. Option C is correct, pregnancy. RH incompatibility is a risk during pregnancy. Next is what is the shelf life of a stored whole blood with CPDA? What is the shelf life of a stored whole blood with CPDA? तो ऑप्शन दिया हुआ है 3, 7, 21, 35 डेज। तो ब्लड बैग में रहता है CPDA। तो ये CPDA जो है ये एक्सटेंड करता है होल ब्लड शेल्फ लाइफ अप टू 35 डेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज which component is separated from blood for clotting therapy? Which component is separated from blood
for clotting therapy, plasma, RBC, platelets, and cryoprecipitate. Option D is correct, cryoprecipitate. Which component is separated from blood for clotting therapy? Option D is correct, cryoprecipitate. Next is which test is used to detect antibodies in donor or recipient blood? Which test is used to detect antibodies in donor or recipient blood? ऑप्शन देखें तो एलिसा जो HIV को डिटेक्ट करता है, एंड एलिसा टेस्ट, ब्लड कल्चर, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, यूरिन टेस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, जो आइडेंटिफाई करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेड सेल. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेन ब्लड ग्रुप्स आर देयर इन द एबियो सिस्टम? हाउ मेनी मेन ब्लड ग्रुप्स आर देयर इन द एबियो सिस्टम? तो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 6. How many main blood groups are there in the ABO system? Option C is correct, 4. There are 4 ABO groups. Those are A, B, AB, and O. Next is what is the function of blood bank refrigerator? What is the function of a blood bank refrigerator? Option दिया हुआ है mix blood, transport blood, maintain storage temperature, increase blood pressure. Option C is correct, maintain storage temperature. What is the function of a blood bank refrigerator? Option C is correct, maintain storage temperature. Next is which blood component is most often used in cases of severe anemia? Which blood component is most often used in cases of severe anemia? ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, पैक्ड रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट सेल. Which blood component is most often used in cases of severe anemia? Option C is correct, packed red blood cell. तो PRBC जो है ये यूज़ किया जाता है टू रेज हेमोग्लोबिन लेवल्स इन एनीमिया. नेक्स्ट इज डायलिसिस. डायलिसिस इज ए ट्रीटमेंट फॉर व्हिच ऑर्गन फेलियर? कौन सा ऑर्गन फेल होने में डायलिसिस ट्रीटमेंट को किया जाता है? तो हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट, किडनी. तो डायलिसिस जो है ये रिप्लेस करता है किडनी फंक्शन को बाय रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड. नेक्स्ट इज द मशीन यूज्ड इन डायलिसिस कॉल्ड. Machine used in dialysis is called ventilator, hemodialyzer, defibrillator, and spirometer. Option B is correct, hemodialyzer. Hemodialyzer. The machine used in dialysis is called hemodialyzer. Hemodialyzer क्या करता है? फिल्टर करता है waste from blood during dialysis. Next is what is the remove from the body during dialysis? What is removed from the body during dialysis? ऑप्शन दिया हुआ है hormones, enzymes, waste products and excess water and oxygen. ऑप्शन C is correct, waste products and excess water. What is removed from the body during dialysis? Option C is correct, waste products and excess water. तो डायलिसिस क्या करता है? डायलिसिस रिमूव करता है यूरिया एंड क्रिएटिनाइन एंड एक्सेस फ्लूइड. Next is what is the ideal frequency of hemodialysis for a chronic patient? What is the ideal frequency of hemodialysis for a chronic patient? ऑप्शन दिया हुआ है once a week, daily, 3 times a week, once a month. तो what is the ideal frequency of hemodialysis for a chronic patient? ऑप्शन C is correct, 3 times a week. What is the ideal frequency of hemodialysis for a chronic patient? तो ऑप्शन C is correct, 3 times a week. तो मोस्ट क्रोनिक पेशेंट जो है ये अंडरगो हेमोडायलिसिस थ्राइस वीकली. नेक्स्ट इज एबी फिस्टुला. एबी फिस्टुला जो कनेक्ट करता है ये आर्टेरियोवेनस जो है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जॉइंस एन आर्टरी एंड वेन. ऑप्शन A is correct, artery and vein. Arteriovenous.
Fistula connects vein and artery. Next question is peritoneal. Peritoneal dialysis uses which part of the body? Peritoneal dialysis uses which part of the body? Lungs, heart, abdominal lining and skull. Option C is correct, abdominal lining. Peritoneal dialysis uses which part of the body? Option C is correct, abdominal lining. तो peritoneal dialysis जो है ये uses the peritoneal membrane to filter blood. Next is which waste product is commonly measured in dialysis patients? Which waste product is commonly used to measure in dialysis patient? Glucose, urea, hemoglobin, calcium. Option B is correct, urea. Which waste product is commonly measured in dialysis patient? Option P is correct, urea. यूरिया लेवल जो है ये इंडिकेट्स करता है किडनी फंक्शन को एंड मॉनिटर ड्यूरिंग डायलिसिस. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डायलाइसिस फ्लूइड? डायलाइसिस फ्लूइड का मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड ऑक्सीजन, किल जर्म्स, रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर. ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन. डायलाइसिस जो है डायलिसिस हेल्प्स to remove waste and extra electrolyte from the blood. Next is common complication during dialysis includes high hemoglobin, vomiting, low BP and cough, hypertension. तो common complication during dialysis include option C is correct, low blood pressure या hypertension. तो sudden drop in blood pressure is a frequent complication during dialysis. Next is what should be checked before starting dialysis? डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले कौन सा चेक करना चाहिए? विजन, हंगर, वास्कुलर एक्सेस, लंग्स फंक्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, वास्कुलर एक्सेस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next is hemodialysis is performed through oral medicine, nasal spray, blood circulation, skin patches. Option C is correct, blood circulation. तो ब्लड जो है ये सर्कुलेटेड होता है थ्रू डायलिसिस मशीन फॉर फिल्ट्रेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट imbalance in kidney failure mostly affects level. Electrolyte imbalance in kidney failure mostly affects level of zinc, potassium, vitamin C, iron. Option B is correct, potassium. तो हाई पोटाशियम जो है ये डेंजर है फॉर रीनल फेलियर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन किडनी फेलियर मोस्टली अफेक्ट्स द लेवल ऑफ पोटाशियम एंड हाई पोटाशियम जो है ये डेंजर है इन रीनल फेलियर. नेक्स्ट इज फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन ऑफ हिपेरिन ड्यूरिंग डायलिसिस. फंक्शन ऑफ हिपेरिन ड्यूरिंग डायलिसिस ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज ऑक्सीजन, डिक्रीज पेन, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्प्रूव डाइजेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग. तो हिपेरिन जो है फंक्शन ऑफ हिपेरिन ड्यूरिंग डायलिसिस, तो हिपेरिन क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को इन डायलिसिस ट्यूबिंग. हेपारिन prevents clot formation in dialysis tubing. Next is dry weight. Dry weight in dialysis means weight before dialysis, weight of blood, weight without excess fluid, weight of clots. So dry weight in dialysis means option C is correct, weight without excess fluid. Dry weight in dialysis means weight without excess fluid. Next is filter. Filter in dialysis machine is called dialyzer. Option B is correct, dialyzer. Filter in dialysis machine is called dialyzer. Next is what is the primary goal of physiotherapy? फिजियोथेरापी का प्राइमरी गोल क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है
cure infection, perform surgery, improve movement and function. Option D, prescribe medication. The primary goal of physiotherapy is, option C is correct, improve movement and function. फिजियोथेरेपी क्या करता है? हेल्प रिस्टोर मोबिलिटी एंड फिजिकल फंक्शन. नेक्स्ट इज व्हिच ट्रीटमेंट यूजेस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू रिड्यूस पेन. व्हिच ट्रीटमेंट यूजेस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू रिड्यूस पेन. ऑप्शन दिया हुआ है अल्ट्रासाउंड थेरापी, टेंस, हीट थेरापी, मैनुअल थेरापी. ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेंस. ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन क्या करता है? रिलीव करता है, रिलीव्स पेन यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. व्हिच ट्रीटमेंट यूजेस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन टू रिड्यूस पेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन रिलीव्स पेन यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपी इज मेनली यूजफुल फॉर. फिजियोथेरेपी इज मेनली यूजफुल फॉर. ऑप्शन दिया हुआ है स्किन डिसऑर्डर, फ्रैक्चर, मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, डी कैंसर. Physiotherapy is mainly useful for, option C is correct, musculoskeleton and neurological issues. Next is which machine is used to apply ultrasound therapy. कौन सा मशीन यूज करके अल्ट्रासाउंड थेरापी को अप्लाई किया जाता है? MRI, ट्रेडमिल, अल्ट्रासोनिक यूनिट, CT स्कैनर. ऑप्शन सी इज करेक्ट, अल्ट्रासोनिक यूनिट. तो अल्ट्रासोनिक थेरापी जो है, अल्ट्रासोनिक थेरापी मशीन डिलीवर्स डीप हीट टू टिश्यूज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, अल्ट्रासोनिक यूनिट. नेक्स्ट इज ROM इन फिजियोथेरापी. फिजियोथेरापी में ROM का फुल फॉर्म क्या कहता है या स्टैंड फॉर. ऑप्शन दिया हुआ है रेट ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन, रेस्ट ऑफ मसल एंड रेशियो ऑफ मूवमेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेंज ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज गेट ट्रेनिंग हेल्प्स इम्प्रूव. गेट ट्रेनिंग हेल्प्स इम्प्रूव स्लीप, विजन, वॉकिंग, स्पीच. ऑप्शन सी इज करेक्ट, वॉकिंग. गेट ट्रेनिंग हेल्प्स इम्प्रूव. ऑप्शन सी इज करेक्ट, वॉकिंग. तो गेट ट्रेनिंग जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर पेशेंट विथ वॉकिंग डिफिकल्टीज. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फिजिकल थेरापी मॉडलिटी. कॉमन फिजिकल थेरापी मॉडलिटी. ऑप्शन दिया हुआ है सर्जरी, एक्सरे, हीट एंड कोल्ड थेरापी, कीमोथेरापी. कॉमन फिजिकल थेरापी मॉडलिटी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, हीट एंड कोल्ड थेरापी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फिजिकल थेरापी मॉडलिटी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, हीट एंड कोल्ड थेरापी. Next is physiotherapist often treat a stroke patient, dental patient, psychiatric patient and a dermatological patient. Option A is correct, physiotherapist often treat a stroke patient. Physiotherapist often treat a stroke patient. Next is cryotherapy involves the use of साउंड, कोल्ड, लाइट, वाइब्रेशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्रायोथेरापी जो है ये पेन को रिड्यूस करता है एंड एज वेल स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है यूजिंग कोल्ड एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज हाइड्रोथेरापी इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूजिंग स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आइस. ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाटर. हाइड्रोथेरापी इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूजिंग वाटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो हाइड्रोथेरापी जो है ये वाटर को यूज़ करके टू इम्प्रूव मूवमेंट एंड रिड्यूस पेन. नेक्स्ट इज व्हिच जॉइंट इज कॉमनली ट्रीटेड इन फिजियोथेरापी फॉर आर्थराइटिस. व्हिच जॉइंट इज कॉमनली ट्रीटेड इन फिजियोथेरापी फॉर आर्थराइटिस. नेक, एल्बो, नी, जॉ. ऑप्शन सी इज करेक्ट, नी. व्हिच जॉइंट इज कॉमनली ट्रीटेड इन फिजियोथेरापी फॉर आर्थराइटिस. ऑप्शन सी इज करेक्ट, नी. Next is isometric exercise involves movement with height, movement without contraction, contraction without joint movement and resting. तो isometric exercise involves, option C is correct,
contraction without joint movement. तो isometric exercise involves option C is correct, contraction without joint movement. Next is traction therapy is mainly used for. Traction therapy is mainly used for cardiac problems, spinal, vision correction and lungs infection. तो traction therapy is mainly used for option B is correct, spinal problem. तो ट्रैक्शन थेरापी जो है ये हेल्प करता है रिलीविंग स्पाइनल प्रेशर एंड करेक्टिंग एलिगमेंट. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में रिक्वायर चेस्ट फिजियोथेरापी. कौन सा कंडीशन में रिक्वायर चेस्ट फिजियोथेरापी. एस्थमा, डायबिटीज, फ्रैक्चर, स्किन एलर्जी. तो कौन सा बोला है कंडीशन में रिक्वायर चेस्ट थेरापी फिजियोथेरापी. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस्थमा. फ्रैक्चर तो नहीं होगा, स्किन एलर्जी नहीं होगा, बोला है चेस्ट फिजियोथेरापी रिक्वायर होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस्थमा. नेक्स्ट इज व्हिच प्रोफेशन वर्क्स क्लोजली विद फिजियोथेरापिस्ट फॉर रिहैबिलिटेशन. व्हिच प्रोफेशन वर्क्स क्लोजली विद फिजियोथेरापिस्ट फॉर रिहैबिलिटेशन. डर्मेटोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, डेंटिस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स. Which profession works closely with physiotherapist for rehabilitation? Option C is correct, orthopedic doctors. Next is optometry. Optometry deals with the study of teeth, heart, eyes and vision, skin. Option C is correct, eyes and vision. Optometry deals with the study of, option C is correct, eyes and vision. Next is unit of measuring the power of a lens is. The unit of measuring the power of a lens is meter, diopter, watt, hertz. Option B is correct, diopter. Unit of measuring the power of a lens is diopter. तो लेंस पावर जो है ये मेजर किया जाता है diopter, D, indicating focusing strength. Next is myopia is also called. तो myopia जो है ये also called near sightedness. Option B is correct, near sightedness. तो मायोपिया में क्या होता है, नियर बाई जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लियरली दिखाई देता है, बट डिस्टेंस जो है दूर में जो रहता है ऑब्जेक्ट उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है या ब्लरी बोल सकते हो. ऑप्शन बी इज करेक्ट. मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस. जो मायोपिया जो पास में जो या बोलते हो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली दिखाई देता है, बट जो दूर में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको ब्लरी या अच्छे से दिखाई नहीं देता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड. ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, लेंस. ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉर्निया. द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया. Transparent front part of the eye is called cornea. Next is which part of the eye controls the amount of light entering. Which part of the eye controls the amount of light entering. Cornea, retina, iris, optic nerve. Option C is correct, iris. Which part of the eye controls the amount of light entering. Option C is correct, iris. तो आइरिस क्या करता है, ये पुपिल साइज को एडजस्ट करता है एंड रेगुलेट लाइट एंटरिंग द आई. नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस एंड कॉन्टैक्ट लेंस. ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस. हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. एंड और याद रखिएगा एमसीबी जो है मायोपिया के लिए कॉन्केव लेंस. हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड एमसीबी मायोपिया के लिए कॉन्केव लेंस. नेक्स्ट इज व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड विजन. गुड विजन के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है. विटामिन बी, सी, ए, के. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी विटामिन ए. विटामिन ए क्या करता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है एंड मेंटेन्स हेल्दी रेटिना. नेक्स्ट इज
colored part of the eye is the cornea, retina, iris, sclera. Option C is correct, iris. तो iris जो है is the colored ring that controls the pupil size. iris क्या करता है? iris जो है ये colored ring है तो that controls the pupil size. pupil size को control करता है iris. Next is the instrument used to examine the inside of the eye is. Instrument used to examine the inside of the eye is otoscope, thermometer, ophthalmoscope, and endoscope. Option C is correct, ophthalmoscope. The instrument used to examine the inside of the eye is ophthalmoscope. Next is normal vision range for a Snellen chart. What is the normal vision range in Snellen chart? तो 6/6 ए नॉर्मल विजुअल इक्विटी है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6/6. नेक्स्ट इज astigmatism is caused by float cornea, irregularly shaped cornea, cloudy lens, retinal damage. तो astigmatism is caused by option B is correct, irregularly shaped cornea. Next is a person with 6/60 vision. A person with 6/60 vision has normal vision, can see distant object clearly, can only read very large letter, has hearing loss. A person with 6/60 vision, option C is correct, can only read very large letters. तो 6/60 जो है ये 6/60 vision जो है is poor and the person sees at 6 meter and normal person sees at 60 meter. Next is which part of the eye converts light into nerve signal? कौन सा part of the eye converts light into nerve signal? Iris, lens, retina, cornea. Option C is correct, retina. Retina जो है ये contains photoreceptor cell that convert light into electrical signal. Next is optic nerve connects the eye to the heart, spinal cord, brain, lungs. Option C is correct, brain. The optic nerve connects the eye to the brain. तो ऑप्टिक नर्व क्या कैरी करता है? ऑप्टिक नर्व जो है ये विजुअल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, रेटिना टू द ब्रेन. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन दिया हुआ है ईयर पेन, ब्लरी विजन, चेस्ट पेन, स्नीजिंग. ऑप्शन कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लरी विजन. ब्लरी विजन इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट. तो टोटल शायद 170 क्वेश्चन या हाँ 170 शायद क्वेश्चन होगा. एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर टोटल 11 कोर्स इंक्लूडेड है. सब क्वेश्चन से मतलब कोर्स से एक क्वेश्चन करवाया है एंड टोटल 3 वीडियो में अपलोड किया है. देखिएगा सब वीडियो को, आप लोगों को हेल्प होगा क्योंकि पूछ सकता है, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसका रिलेटेड ये एग्ज़ाम हो रहा है एंड क्वेश्चन भी पूछ सकता है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.